Hey guys, this is Sahil and welcome to yet another episode of Weekly Mastermind. Weekly Mastermind में आप सभी का स्वागत है. And in this episode, like the previous episodes itself, we are going to do the overall top-down approach कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि आउट परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, एंड ओवरऑल मार्केट का क्या सिनारियो चल रहा है, वेदर इट इज निफ्टी 50 और इवन बैंक निफ्टी. और बैंक निफ्टी में भी हम लोग प्राइवेट और पीएसयू बैंक्स का भी एनालिसिस करेंगे. सो मेक श्योर यू वॉच दिस एपिसोड फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर या फिर फेसबुक पेज पर बिल्कुल न्यू हो, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम. एंड इफ यू आर समवन हु इज न्यू टू टेक्निकल एनालिसिस जर्नी, प्लीज डू मेक श्योर आप हमारी बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस सीरीज के एपिसोड 1 से देखिए. टोटल 13 एपिसोड अब तक लाइव हो चुके हैं, सो दैट यू कैन हैव अ स्ट्रॉन्गर ग्रिप ऑफ व्हाट टेक्निकल एनालिसिस इज ऑल अबाउट और कौन से ऐसे टूल्स और इंडिकेटर्स हैं विद व्हिच वी एक्चुअली एनालाइज इन द मार्केट. Right, so let's quickly have a look at what we have for this week in terms of Weekly Mastermind. Right, so Weekly Mastermind for 27th of April 2025, जहाँ पे the agenda is going to be absolutely similar. First, we'll have a look at market index, then we will have a look at outperforming and underperforming sectors. So market index देखा जाए तो Nifty up by 0.78, Sensex up by 0.13, Bank Nifty up by 0.68, mid cap up by 2.07. So mid cap sector is performing really well as compared to other indices. Then India VIX up by 10.92, which is not good, and USD INR down by 0.05, which is actually good for us. Right. So overall, देखा जाए तो India VIX and USD INR are completely opposite, and overall market में positive side ही movement रही. So Nifty 50 मंथली में प्रॉपर मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके कम बैक हो चुका है. प्रॉपर 60 का ब्रेकआउट हो चुका है. वीकली में मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट करके राइट नाउ इट इज बिटवीन 40-60, एंड डेली में जो है डबल सपोर्ट यहाँ पे बन सकता है. फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ RSI 60 एंड सेकंड इन टर्म्स ऑफ प्रीवियस टॉप. सो अगेन यहाँ पे जो है डबल सपोर्ट रीजन बन सकता है. सो नेक्स्ट वीक इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इन ऑर्डर टू वॉच आउट फॉर द मेन इंडेक्स ऑफ द मार्केट, दैट इज निफ्टी 50. देन इन टर्म्स ऑफ बैंक निफ्टी देखा जाए तो मंथली अबव 60, वीकली अबव 60, डेली ऑल्सो अबव 60, एंड यहाँ पे जो है हम लोग हायर बॉटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. थोड़ा सा और भी डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, बट अगेन वी कांट प्रेडिक्ट एनीथिंग. व्हाटएवर विल हैपन, वी आर गोइंग टू ट्रेड बेस्ड ऑन दैट. देयर इज अ फेयर पॉसिबिलिटी दैट यहाँ से हायर बॉटम बन सकता है, एंड इट कुड पोटेंशियली टेक मूविंग एवरेज सपोर्ट एज वेल. राइट, सो वी कैन वेट फॉर दैट एंड देन वी कैन गो ऑन द लॉन्गर साइड, बिकॉज बैंक निफ्टी ऑलरेडी ऑल टाइम हाई को टच करके आ चुका है. Then we have private banks monthly above 60, weekly above 60, daily above 60, similar as of Nifty 50 itself. PSU banks देखे जाए तो monthly 60 के आसपास है, weekly sideways and daily is around 59-60 itself. तो ये all time high zone पे नहीं है. So private banks are performing better as compared to PSU banks. Then we have sector specific movement देखी जाए तो best performing sector was IT up by 6.56, followed by auto 2.90, and worst performing sectors में देखे जाए तो media was down by 2.11, followed by infra 0.50 and FMCG 0.25. Right, so that's the overall mixed match approach on the overall sector performance as well. Then we have Nifty IT monthly sideways, weekly देखा जाए तो 40 के आसपास है, daily भी sideways. Let's see whether next week it is going to take 40 support on weekly chart or else it is going to break out. Then we have Nifty Auto monthly sideways, weekly sideways, daily भी फिलहाल sideways में है. As of now हम लोग wait कर सकते हैं whether it is going to actually break out of 60 again and sustain above that or not. Then we have metal मंथली में 60 रेजिस्ट कर चुका है ऑलरेडी, वीकली में साइडवेज, डेली भी साइडवेज, फिलहाल हम अवॉइड करेंगे. देन वी हैव एफएमसीजी मंथली साइडवेज, वीकली साइडवेज, डेली अबव 60. We can wait for higher bottom to get formed and then we can actually trade in this sector. Then we have energy monthly sideways, weekly sideways, and monthly में तो already moving average के भी नीचे है, so we can completely avoid this sector from the long term approach as well, at least for couple of weeks, जब तक overall जो है डेली चार्ट और वीकली चार्ट सुधर नहीं जाता है. एंड डेली में जो है अगेन 56-57 के आसपास है. देन वी हैव निफ्टी फार्मा मंथली अबाउट 60, वीकली साइडवेज, डेली में थोड़ा साइडवेज आ रहा है. अगेन वी कैन वेट एंड वॉच आउट फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्टर एज वेल. देन वी हैव इंफ्रा मंथली में फ्रेश ब्रेकआउट कर रहा है एंड वीकली में साइडवेज, डेली अराउंड 58-59. अगेन यहाँ पे जो है प्रॉपर 60 तो नहीं है, बट वहां पे जो है प्राइस का हायर टॉप जो बना था वहां पे भी सपोर्ट ले सकता है, एंड अगेन इट कैन टेक 58-59 RSI का सपोर्ट, and then double confirmation के साथ it can move forward on the upper side as well, or else it can turn around on the lower side. Right, then we have Nifty Realty monthly sideways, weekly sideways, daily भी sideways. Right, फिलहाल avoid करेंगे. मीडिया मंथली अराउंड 39-40, वीकली साइडवेज, डेली में प्रॉपर रेजिस्टेंस ले चुका है. मीडिया को तो हम अवॉइड ही करते आ रहे हैं. राइट, सो आई होप दैट यू आर एब्सोल्युटली क्लियर कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि आउट परफॉर्म कर रहे हैं एंड कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको हमें जो है ट्रैकिंग लिस्ट पे रखना है, सो दैट वी कैन हैव अ वॉच आउट ऑन दैट.
कि अगर वो आउट परफॉर्म करते हैं, अगर वो ब्रेकआउट्स दे देते हैं, प्रॉपर प्रीवियस स्टॉक्स के सपोर्ट को क्या बोलते हैं कंफर्मेशन दे देते हैं, देन वी कैन एक्चुअली ट्रेड इन दो सेक्टर्स। अगेन वो सेक्टर्स में जाके आपको सारे स्टॉक्स को फिल्टर आउट करना है कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं, एंड देन यू हैव टू ट्रेड स्पेसिफिकली इन दोस पर्टिकुलर स्टॉक्स इटसेल्फ। आप इंडेक्स स्पेसिफिक में ट्रेड नहीं कर सकते हो, यू कैन ट्रेड इन ऑप्शंस इन निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी, बट नॉट इन अदर सेक्टर्स, राइट? सो आई होप दैट यू आर एब्सोल्युटली क्लियर विद दिस ओवरऑल टॉप डाउन अप्रोच ऑफ द मार्केट। जैसे कि होता है फर्स्ट द ग्लोबल मार्केट अप्रोच, जो कि हम लोग यूट्यूब पे शेयर नहीं करते हैं, देन कम्स द इंडियन मार्केट, जो मेन इंडाइसेस है, दैट इज निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी, फॉलोड बाय सेक्टर स्पेसिफिक एनालिसिस, एंड देन स्टॉक स्पेसिफिक हम लोग पहले शेयर किया करते थे, बट राइट नाउ वी हैव स्टॉप डूइंग दैट एज वेल, बिकॉज काफी सारे स्टॉक्स जो थे they were down by 50-60% from their all time high zones as well, and वहां पे हमें top performing sectors top performing stocks नहीं मिल रहे थे, so that's why we just paused that particular analysis of stock specific. But again in future maybe we can think of getting back stock specific analysis as well, but as of now हम लोग सिर्फ मेजर इंडाइसेस जो है निफ्टी 50 बैंक निफ्टी फॉलोड बाय अदर सेक्टर्स इन द मार्केट उसका ही एनालिसिस कर रहे हैं, एंड आई होप दैट यू आर एब्सोल्युटली क्लियर विद दिस। एंड प्लीज टू मेक श्योर दैट अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जानना है, you can check out our basics of technical analysis series. 13 episodes already ho chuke hain, and next week we are going to discuss something very important as well, so please do make sure that you stay tuned for that. And if you got value from this epic episode, do share this with at least one friend of yours, and I'll see you in the next one. Till then, live fully, love openly, and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.